recording of the last lecture. So I think some student Saad had asked a question. I think he is not at this time present in the lecture, but I would like to explain his question. So at that was end of the time, and I was also uh, half sleep. Then when I woke up, then the time was already finished. So I will just answer his question that was asked in the last 1-2 minutes of the last lecture. Now his question was that why we couldn't get 4 times gain as the gain that we were getting in LMUT scheme. So here remember that we cannot get that 4 time gain because we are not coding across time. In LMUT you could see that we were coding across time. That is why even for MISO you were getting double gain. And if you apply LMUT to MIMO, then as shown example 3.20, you can get a diversity gain of 4. Now what he is discussing, just to repeat the last few points that might have not been properly understood, I might not have explained them properly, was that how can we understand the transition from MISO to MIMO. All right. One thing is that let us assume that we are working on SIMO. So I have a single transmit antenna and I have multiple receive antennas. All right. This we have actually covered in the last few lectures. Now in that case, what will happen? I send only one symbol X, and that one symbol will be received at L different antennas. Let us say you have L antennas, so H will be H1 to HL. So all those L antennas will get the one symbol from L different paths. So here your dimensionality will be h of x, all right? Or you can say you have one dimension space spanned by the vector h. Now, what happens when I say I have a 2 cross 2 channel? Then actually what happens? Let us say x1 is sent from one antenna. Now it will be multiplied by h1. Now what is h1? H1 is also like h. But this H1 will be from one antenna to one antenna of the receiver, from one antenna to second antenna of the receiver. It is just, you can say, that I have expanded this SIMO representation to this MIMO representation. Now again I have h of x, but here I write it at h of x1 and h1 because I have two antennas. It is so, and I have also two transmit antennas. All right. So from one antenna, I am not sending X, rather I am sending X1. And let us say I have L receive antenna. So and those L, it's 2 now. So H1, H2 corresponding to X1 from one antenna. So this will be, you can write this as just H1 antenna, H1 vector. H1 vector will have the coefficients from one antenna of the transmitter to one antenna of the receiver. One antenna of the first antenna of the transmitter to second antenna of the transmitter of the receiver. Similarly, at the same time, I will be sending X2 from the second transmitter. So it will again have two parts to the two receive antennas. That will be H21 and H22. Both will be covered in this vector H2. Are you understanding what I am saying here? सर एंटीना डाइवर्सिटी में कोहेरेंस टाइम का कोई इशू नहीं होता? कोहेरेंस टाइम का, अच्छा आप अच्छा सवाल पूछे। कोहेरेंस टाइम था टाइम डाइवर्सिटी में, ठीक है ना? So there we had to deliberately send the other symbol in an other coherence time so that you could get time diversity gain or diversity gain, but that gain was coming with respect to time. But when you are studying space, then here you have another diversity, which is spatial diversity. If you place the antennas
far apart, then their channel coefficients, they could be independent. In the same coherence time, they will be independent. But their independence is because of space. It is not because of time. ठीक है सर। सर ये एक मैंने आपको मेल भी की थी, क्वेश्चन आपने आंसर तो कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन ये था कि टाइम स्लॉट और कोडिंग सिंबल टाइम भी हम यूज़ कर रहे थे, दो टर्म्स फ्रीक्वेंटली। तो मतलब अगेन हम दो टर्म्स और इंट्रोड्यूस करवाते हैं टाइम की, सर वो किस लिए हम, यानी वो चीज़ क्या शो कर रही है? हम सिर्फ कोहेरेंस टाइम की बेस पे भी तो टाइम डाइवर्सिटी को ऑल इन ऑल कर सकते थे, तो ये ज़रा बता दें कि ये स्पेस पढ़ है ना, स्पेस में हमने कहा है कि हम लोग एक ही कोहेरेंस टाइम में आप भेज दें जी, उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आप सेकंड कोहेरेंस टाइम का इंतज़ार करें। उसी कोहेरेंस टाइम में आप अपने सिंबल को रेप्लिकेट, जैसे अलमूटी में आपने भेजा, फिर उनको घुमा के दोबारा भेज दिया, उसी कोहेरेंस टाइम में भेजा आपने। ठीक हो गया? सो जी सर। मतलब यहाँ पे ज़्यादा आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, क्योंकि यू ऑल्सो हैव स्पेस, यू कैन ऑल्सो यूटिलाइज स्पेस। So मतलब कि that is the reason you don't have to wait for the coherence time, and that is why we are not discussing coherence time right now. ठीक है? We are just saying that even within the same coherence time, I am sending my symbols, but I will be sending my symbols intelligently. All right, so that they are giving me diversity game. अच्छा, but if you use repetition coding over spatial or space diversity, then you have to matlab ke, then you will be sending in different coherence time. But you can replicate that repetition coding by using this technique जो हमने बताया था आपको last time, कि you just send one symbol from first antenna, you send the same symbol from the second antenna. Now the signals that will be coming, they will be independent, because the channel from the first and from the second, they are actually independent channels. ठीक है? सर मतलब सिंबल टाइम कोई और चीज़ है, यानी कोई और टर्म है? हाँ, सिंबल टाइम तो एक है ना कि आपके टाइम, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर सिंबल. ठीक है? And you will be sending your symbol, let us say in one duration, in the next duration you can send the same symbol, or you can send some other symbol that is already there. But now the coherence time is not that important. Even still you can use coherence time, okay? But once you have this spatial diversity, then you can get gains with respect to space. Yes. वो आपने जो सवाल पूछे उनको डिस्कस करने की जरूरत है, या फिर अभी हम वो ईमेल ही कर दूं उसको? सर जैसे आपको मैं आपने दो लास्ट कॉल में तो मेरे ख्याल से यही रह गए दो सवाल. अच्छा, क्या ना कुछ करते हैं इसका, शेयर करें. सर मेरा भी एक क्वेश्चन. अच्छा चलें, ठीक है, एक मिनट. मैंने आपके वजह से उस सवाल का जवाब दिया जो आपने उस दिन पूछा था ना, जो मैं बिल्कुल आखिर टाइम पे भी मैं जवाब नहीं दे सका था, उसका मैंने जवाब दिया. मगर अभी आपका भी सवाल ले लेते हैं, पहले इनका कर लेंगे. इन्होंने शायद ईमेल भी की हुई है, मैं शायद इसमें तो मैं ईमेल्स का जवाब दे देता हूँ, शायद इसका जवाब नहीं दिया. सर, इन रेपुटेशन कोडिंग ऑफ वीडियो लेक्चर 16 माय प्रॉब्लम इज अटैच्ड विद अपलोडेड इमेज. अच्छा सर, एज वी नो सिग्मा मींस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सिग्मा स्क्वायर इज वेरिएंस. ऑलराइट, but in attached image we are saying sigma as variance, instead of saying standard deviation because of absence of square. So I have to see the image, but I can you can just see if there is a mistake, then there will be a mistake. So normally sigma square is always a variance and sigma is the standard deviation. So there might be some mistake by my side, but most of the time this is all variance is always sigma square. In the test figure, if means are subscripted as 1, 2, 3, why not sigmas are subscripted? Acha, means are subscripted by 1, 2, 3. Oh. Acha. So I think there would be different means, but the variances will be the same. So you can see here,
that the means are the same. अच्छा ये आपको नजर ही नहीं आ रहा होगा. यस सर, आ रहा है ना, विजिबल है विजिबल है आपको? अच्छा वेरी गुड. मतलब, जी सर. चलिए ठीक है. So you can see here that the means are different. If the means are different, then you have to write different. If they are same, you can just write 0. Alright. So the means are different here, and in this problem, these are your noises. And yes, this means that sigma, these variances are same. Alright. So it all depends on the type of problem or type of vector, and how those each of those components are present. So if the components have different means, you have to take different means. Many times the means are the same. It's सर zero. इमेज अच्छा इमेज शो नहीं हो रही. वो कैसे कह रहे हैं सर शो हो आपने रही है? शेयर नहीं किया. नहीं सर मैं डेस्क लैपटॉप पे देख रहा हूँ, मे भी हो सकता है स्मार्टफोन पे ना हो. हाँ? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, मैं शेयर करती हूँ. हाँ जी, आई थिंक एवरीवन कैन नाउ सी. यस सर. यस. वो देखिए ना, इनकी तो प्रॉब्लम ही ऐसी कि यहाँ पर उन्होंने मीन को डिफरेंट लिया हुआ है, सिग्मा को सेम लिया हुआ है. सो इफ दिस इज द प्रॉब्लम, देन वी विल टेक दिस प्रॉब्लम, वी विल फाइंड द जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू दिस. ठीक है. If it was different, we will take different. Okay. It all depends on what type of vector form you are working and what type of joint distribution you want to find. सर मीन्स हमें मेंशन होगा इंस्ट्रक्टर की तरफ से कि सेम मीन्स, डिफरेंट मीन्स और सेम वेरिएंसेस. हाँ वो आप या तो मेंशन होगा या आप गेज कर लें. तो पहले हमने बताया, जैसे मैंने जब ये यूज़ किया होगा इस लेक्चर में, तो वहाँ बताया होगा कि भाई किस किस्म का आपका वेक्टर है, और उस वेक्टर का पता होगा जी डेविएशन उनकी सेम है और उनकी वेरिएंसेस डिफरेंट हैं या वेरिएंसेस सेम है. बाकी ये तो गलती है अगर मैंने उसको कह दिया. स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा सिग्मा ही होती है, अंडर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर जो वेरिएंस होती है. वो आपकी बात सही है. सो आई विल एंड दिस थिंग नाउ. वी कैन गो बैक टू आवर लेक्चर. अच्छा हाँ, यस द अदर क्वेश्चन आई थिंक वाज बाय मोहम्मद साद. यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? सर सवाल ये है कि एलामूटी कोड पे सर मूव कीजिएगा सर प्लीज. मूव. अच्छा वो आप पिछले जाना चाहते हैं, इतना पुराना? सर वो सर बस वो यस सर. अच्छा सर इसमें ये हम देख रहे हैं कि हमने सेकंड टाइम में भेजा, तो उसमें हमने जो सिग्नल भेजा उसको उसको U2 स्टेरिक माइनस U1 स्टेरिक ऐसे करके भेजा. सर उसकी वजह से चैनल पे ये फर्क आ गया कि वो H2 स्टेरिक और H-H1 स्टेरिक बन गया. लेकिन सर हम इसमें देख रहे हैं कि हम उसमें टाइम के डिफरेंस की वजह से चैनल के कोफिशिएंट में फर्क कोई नहीं आया. हालांकि टाइम रेपिटेशन जो टाइम डाइवर्सिटी थी उसमें चैनल में फर्क आ जाता था. तो सर ये यही इसकी तो क्या वजह है? आपके, यही तो इन्होंने भी सवाल पूछा. मैं यही बता रहा हूँ कि हम सेम कोहेरेंस टाइम में भेज रहे हैं. एलएमटी जो है वो क्या कहता है, सेम कोहेरेंस टाइम में भेजें आप. सही समझ सर. आ गया आप? ठीक है सर. तो H1 H2 चेंज ठीक नहीं है होगा. सर. ठीक है. अच्छा, और उनका भी तीसरे बंदे, आपका भी सवाल था. क्या नाम है उनका? सादी नाम है उनका भी, और उनसे उनका नाम शिराज है शायद. अहमद शिराज सर. अहमद शिराज. हाँ, जी any सर. question? अहमद शिराज सर, do you have any question? नो सर. अच्छा ठीक है. So we come back to the lecture now. क्या कह रहा है? Right. So remember here that this is symbol x1 from one antenna. It will be received at two antennas, so this will be received through a vector. This is a second symbol sent simultaneously from the second antenna. It will be received at two antennas of the receiver with different channel coefficients represented by H2. Now, if H1 and H2 are independent, my signal space dimension is 2. If it is one signal space dimension for SIMO, so it has to be two signal space dimensions for MIMO, because you are having two antennas and each antenna is receiving the signal from two other antennas. So
for even from one antenna, you can very well see you are getting the signal in two antennas. So that is one dimension, and the other transmit is also sending another signal. Hence, your spatial dimension will be 2 as compared to one dimensional space for SIMO. All right. If they are independent, yes, you can get two symbols at one time. This will means that in two slots you can get four symbols. But in LMOT, you were just getting two symbols output. Even for MIMO, your gain was 4 times diversity gain, but your degrees of freedom, you were still getting two symbols in two slots or one symbol in one slot. But we have seen that here, as you have 2 degrees of freedoms, you can actually get two symbols in one time slot. So repetition and LMOT, they do not utilize all degrees of freedom in a 2x2 channel. So what we need is that every time and for every antenna, you send a different symbol. This way, in two slots, you can get 4 symbols. In one slot, you can get 2 symbols. All right. So one example is which is the spatial multiplexing scheme. And independent data streams are multiplexed in space. It is also called VBLAS. And in order to drive the scheme, we extend the derivation of the pairwise probability in 3.85 from single to multiple receive antennas. And if you have n r receive antennas, then it can be shown in this exercise. It has been shown that probability of confusing this code word with this code word is given as follows. This is, if you can compare with the 3.85, you can see this was already there. Only the power has been replaced by NR. There, we say that for high SNR, 1 was small, so this became SNR to the power L. 4L went into the numerator, and this became sigma. This multiplicative sign can be a multiplication of all the products of all the eigenvalues, and that was equal to the determinant of the matrix. That we have done. Only what happens is the power becomes there the power was 1, now the power is NR, the number of received antennas. Now if I want to evaluate this, so this is for general space-time blocks XA, XB, but we could see that this scheme VBLAST, this is not coding across time, this is just coding across space, because you are sending 1, 2 symbols, then the next time slot you are sending 3, 4 symbols. You are not repeating with respect to time. So here the block length is 1, and the code words are also 2-dimensional vectors, x1 and x2. They will not be matrix, because for matrix you have to code across time. Just in LMOT mein you send in one time slot, but you send in second time slot. All right. Or in in repetition over LMOT with respect to space time, with respect to time only you have to send with in different chorus time. With space only you have to send with different antennas. So you can very well see here that here we are not coding across time, so our code words will be just vectors, okay, of length 2, because 2 antennas are there. And he says the bond simplifies to this thing. Now he has not given a proof for this, so I have actually done a detailed proof, so that will help you. So probability of confusing XA and XB given channel coefficients we have seen earlier is actually H times XA minus XB.
this is mod, this is 2 and not over 2, as we have found this criteria from the space-time codes, where we know x and xb were actually n cross l. But here a little bit changed, because now my H is L cross 1 matrix. Previously it could be L cross 1 matrix was also previously, but now we notice 2 cross 1, because we just have 2 antennas. We are trying to find for V blast, which has 2 antennas, solving it for only 2 antennas with no coding across time. Now XA is a vector, it's just L cross 1, because you're not coding across time, it's just L cross 1. That is just 2 cross 1 vector, 2 rows and 1 column. So I make the under root go above. This becomes, square, 2 square, this becomes 4. And then I open this, mod square is equal to the vector time its conjugate. So vector time its H, or its conjugate, on conjugate transpose. Conjugate transpose, this comes here and this comes here. Now I know XA minus XB is an L cross 1 vector. So this will be L cross 1, this will be a L cross L matrix. I apply eigenvalue analysis. So L cross L becomes, after orthogonalization, you have this eigen value matrix. These are the orthogonal matrix or containing the eigenvectors. So this is Q now. You have just replaced this by this factor. As already we know, the signal ratio is always 1 over n0, because signal power is normalized to 1. This becomes SNR. And then, these are the sizes of all these vectors. So you multiply this. All the steps we have done actually for finding the space-time criteria for space-time block codes for MISO. We are just repeating them. For this V blast. So this will come out, if you multiply this with this is 2 cross 2, this is 1 cross 2, so you will get 1 cross 2. Alright, so this will be one value, H times the first eigenvector, H times the second eigenvector. Here are the eigenvalues, and this is H product will be here. H goes with Q1 conjugate and Q2 conjugate. Q1 and Q2 are eigenvectors. Now here we know that the rank of our matrix is 1. You will say, sir, why? Because you can see this matrix, whose eigenanalysis we are trying to find, is composed actually of a single independent vector, and that vector was XA minus XB. Alright, so all of the values are actually, dependent on a single eigenvector, because a single vector. So this means that one eigenvalue, there will be 2 eigenvalues, one eigenvalue will be definitely 0, because it is a rank 1 correlation matrix, a rank 1 matrix. So let us say I say the first one is 0. So if you multiply this with this, so if this is 0, once you multiply this will go 0, HQ2 will go with lambda 2, and when you multiply this with this will go 0, but this will be multiplied with this one, so you will get this factor. Here you can lambda 2 square comes out. Here you can see this is complex conjugate of this factor, so I can write this as conjugate of this, and then their product gives us the mod square of this dot product of these two vectors. Now we know H is a Rayleigh vector, Rayleigh channel. Q2 is an orthogonal vector, eigenvector.
So their multiplication will give me another Rayleigh vector because of the orthonormal property of Gaussian vectors. And then you can apply the famous bond that q of something is less than e of minus x square over 2. Q of x was this thing, so I take it square. It becomes like this. So probability will be now governed by this factor, this one. Again, I take the average value of the probability as we have done earlier. So we saw the average value is equal to 1 over 1 minus s. So I do 1 over 1 minus s. This is totally s. So 1 minus this will come out. So average probability of error will be like this. A question arises, what is this lambda 2? The only non-zero eigenvalue. So here we know that relation of a matrix whose eigenvalue you are interested in, this matrix is multiplied. This matrix is actually equal to the product of the eigenvalues times the eigenvectors. It's a well-known theorem of eigenvalue analysis. And because we have two lambdas and one lambda is 0, so I can just write lambda 2 q2 q2. In I you will have 2 because lambda 1 is 0. Now another property of eigenvector is that the trace of the correlation matrix is equal to sum of the eigenvalues. So trace of the correlation matrix, I just write this correlation matrix is xa minus xb, and this is complex conjugate. This will be this vector, and this will be written as a row vector if it is conjugated. So this will be sum of lambdas, but here our lambdas are lambda squares because of double representing square product of a matrix. That is why it is square. We have described this earlier. So yes, this is like this. Sum of eigenvalues is lambda 2, lambda 1 is 0. So I do its multiplication. After multiplication, it comes out to be as follows. Trace of this is what is trace of this? Trace of this is the trace of this is equal to lambda 2. Trace this means addition of the diagonal terms equal to lambda 2, hence lambda 2. And this is what xa1 minus b1, xa2 minus b2. It is actually nothing but xa minus xb mod square. So just replace lambda square by this value, hence your probability of error of making mistake comes out to 1 over 1 plus SNR xa minus xb mod square. And if you have two receive antennas, you will just take it square. So this will give you, and meaning of square, this becomes 4. This will become square, and this 16 will go here. Now for BPSK samples in spatial multiplexing, you can see the least error will come if I take these symbols xa and xb as follows. But remember that first we have to normalize xa and xb. Normalization will be sum of the signal values. So for BPSK symbols with spatial multiplexing, so I just take this vector and I take another vector xb. I normalize them because the total power will be 1 square plus 1 square will be 2 square.
and then divide by 2 under root. This will be the normalized version. Similarly, I can find the normalized version of xb, usually 1 over under root 2 minus 1 over under root 2. I find their difference. This comes out to be this thing. Then I find the matrix xa minus its conjugate, or conjugate times this. So you can see this is a vector and this is its same vector. This vector is सर ये सिंपल वेक्टर है और ये उसका कंजुगेट है दूसरा, या नहीं ये ट्रांसपोज है? एक्स से जो है ना वो तो वेक्टर हो गया ना, ठीक है ना, मगर ये कॉलम वेक्टर है ना। अब कॉलम को फिर आपको लिखना पड़ेगा एज अ रो, और ये रो और कॉलम जाएगा तो आपके पास एक वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो मैंने यहाँ पे लिखा। तो सर फिर ये हमारे पास ये तो स्केलर वैल्यू देगा ना हमारे पास आंसर? हाँ स्केलर ही देगा, मैट्रिक्स तो नहीं देगा? हाँ स्केलर देगा ना, ये तो आपको स्केलर देगा, आप सही कह रहे हैं जी। ये तो आप देखें ना, यहाँ से आ रहा है ना, यहाँ पे तो वो मैट्रिक्स था ना, ठीक है क्या था, और यहाँ पे हम जानबूझ के स्केलर इसलिए ना, चूंकि हमने तो शो कर दिया कि ये हमने शो कर दिया ना कि वो जो उसका सिग्मा स्क्वायर है वो इसके स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है ना। तो हमें अब क्या ज़रूरत है मैट्रिक्स फाइंड करके फिर ट्रेस निकालें, हम डायरेक्टली इसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ना, एक्स ए माइनस एक्स बी का मॉड स्क्वायर है, उसका मैग्नीट्यूड आ रहा है ना, टू रिसीव एंटेनास के लिए वो स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने डिस्कस कर दिया ना आपके सामने सर। यस सर सही है, क्लियर है सारा, समझ आ गया सर। ये इसका ट्रेस था, ट्रेस जी जी आप कुछ कह रहे हैं सर? जो पेज नंबर 3 ट्रेस है भी उस सेम। एक मिनट, एक पहले बंदा सवाल पूछ, हाँ आप क्या कह रहे हैं सर? पेज नंबर 3 में जो कैपिटल आर की इक्वल आपने वैल्यू लिखी हुई है पेज नंबर 3 पे, हाँ ये है ना जी आपकी। सर, इसमें अगर हम कैपिटल एच पहले वाले ब्रैकेट पे डाल दें तो उससे ऑर्डर चेंज हो जाएगा, तो क्या वो भी हम कर सकते हैं? नहीं वो नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते ना, चलिए आपको तो मैट्रिक्स बनाना है ना। आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए आप इसको लिखेंगे 2x1, ये होगा 1x2, ताकि 2x2 का मैट्रिक्स बन जाए। सर मगर तो ये लेट तो से हमने जी, ये हमने अगर सारा हम प्रूफ कर दिया है ना कि सिग्मा स्क्वायर तो सिंपली उसके मतलब स्केलर प्रोडक्ट के बराबर है ना, एक्स ए माइनस एक्स बी मॉड स्क्वायर, स्केलर वैल्यू आएगी, सिग्मा स्क्वायर आनी भी चाहिए स्केलर वैल्यू। तो यहाँ पे जो हम इसको एवेल्यूएट करें तो हम सिर्फ इसकी स्केलर वैल्यू निकाल रहे हैं। सर ये कैसे स्केलर पता निकाल, चलेगा कि हम जो हार्मोनिक ये हार्मिशन है वो पहली ब्रैकेट पे डालेंगे कि सेकंड वन पे? अगर आपने स्केलर लेना तो पहले पे डालेंगे दो वेक्टर्स का, अगर आपने मैट्रिक्स लेना तो बाद में डालें। तो ये ओके तो सर। बड़ा मशहूर बात है, एक इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, एक को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, अगर टू यस सर। वेक्टर्स की बात हो रही। यस ऐसे ही है। ठीक है, तो फिर आपने सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये जो वैल्यूज़ आई थी इसकी 0 2, और ज़ाहिर है वैल्यू ही 0/2 आई थी, तो उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया 2 का, 2 का मैग्नीट्यूड आ गया। अब इस 2 के मैग्नीट्यूड को आप यहाँ पुट कर दें, जो अभी हमने इतना लंबा चौड़ा ये ड्राइव किया, ठीक हो गया। तो आपने यहाँ पुट किया 16/2 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें कह रहा है एक्स एक्स बी 2 और फिर उसका स्क्वायर, तो एक्स एक्स बी स्क्वायर तो आपने निकाल लिया जो 2 आया, मगर आपको जाहिर इसको स्क्वायर है तो उसको 4 ले लें तो 4 हो जाएगा, 4 4 तो 4 SNR - 2 जवाब आएगा आपका। And you can check in the book that he also says answers come out to be 4 SNR - 2. All right, this means that yes, you are now utilizing your full degrees of freedom, ठीक है, but privacy gain is reduced. You are not getting -4, you are getting -2 because you are not repeating across time. All right, सर एक चीज है सर, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब यानी कि ऑर्थोगोनल के सिग्नल सेंड किए जा रहे हैं?
नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने चैप्टर बड़ी एक्चुअली 2 कंफ्यूज में करती है। डिफाइन किया था कि रिसीव सिंबल्स, नंबर ऑफ रिसीव सिंबल्स, ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर, नंबर ऑफ इसके रिसीव हिसाब से देखिए ना, सिग्नल्स पहले पर टाइम। आपको जी हाँ पर टाइम, जब LMOT माइजो में था तो आपको 2 ही मिलने थे खाली, क्योंकि एक ही एंटीना यस है सर, तो आपको 2 ही एक और मिलेंगे ना 2 चीज। स्लॉट्स में, एक यस स्लॉट में सर, एक ही मिलेगा। तो अगर आप अगर आप 2 टाइम में 2 सिंबल्स गेट कर रहे हैं तो आप फुल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जो चक्कर हो गया ना, यहाँ पे आपने 2 एंटेनाज हैं और 2 रिसीव हैं, तो एक्चुअली तो आप 4 सिंबल्स गेट कर सकते हैं, मगर LMOT आपको सिर्फ 2 दे रहा है, तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को यूटिलाइज नहीं कर रहे। हाँ, ये वी ब्लास्ट में आप बिल्कुल यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले भी x1 x2 भेजा, अगले में आप x3 x4 भेजेंगे, 2 डिफरेंट भेजेंगे, आप रिपीट नहीं करेंगे टाइम के क्रॉस। सर क्वेश्चन ये कि जो LMOT में है, हमने सिंगल हमारे पास ट्रांसमीटर था, 2 रिसीवर थे, उसमें तो हम स्पेस डाइवर्सिटी यूज कर ही नहीं सकते, उसमें ज़्यादा यानी कि यूज नहीं कर सकते सिंबल्स पर टाइम, डिग्री ऑफ फ्रीडम सॉरी। सर इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो ये हम अब पढ़ रहे हैं वी ब्लास्ट, इसमें 2 हमारे पास ट्रांसमीटर और 2 ही रिसीवर हैं जी, मगर हम सर। टाइम के क्रॉस कोड नहीं इसमें कर रहे ना, इसीलिए आपको टाइम डाइवर्सिटी नहीं आ रही। ओके हो गया, तो ये चीज़ क्लियर है। लेकिन सर देखें आप, एक एंटीने का सिग्नल जब जाएगा वो 2 एंटीनास पे जाएगा जो रिसीव पे हैं, और दूसरे का भी उन दोनों पर ही जाएगा। तो सर वहाँ पे उनमें उनमें जो एरर आ सकता है सर, हम वो निकाल रहे हैं, तो ये तो एरर उससे कम आ रहा है जो हमारे पास LMOT में था, ये ज़्यादा आना चाहिए एरर। अच्छा एक सेकंड, वो बिजली चली गई, 1 मिनट होल्ड करें, मैं भी आता हूँ। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हेलो, जी सर, आवाज़ आ रही है यस सर, आवाज़ आ रही है। ये बड़ा चक्कर है यार, क्या करे बंदा। अच्छा खैर, अब आपसे सॉरी दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, आप क्या कह रहे थे? सर क्वेश्चन ये था कि देखें LMOT में हमारे पास सिंगल ट्रांसमीटर था और 2 रिसीवर थे हमारे पास, तो उसमें तो हाँ? समझ आती है कि एरर नहीं, एक एरर मिनट, आप थोड़ा सा गलत समझे। LMOT में आपके पास 2 ट्रांसमिट, अगर माइजो है LMOT में तो आपके पास 2 ट्रांसमिट जी हैं सर, और एक सिंगल है, जी सर, सिंगल रिसीव है। और अगर आप यस, LMOT को यस। माइमो ले जाएंगे तो 2 ट्रांसमिट है और 2 रिसीव है। अच्छा, अब आप बात करें, किसकी बात करें आप? तो सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो हमारे पास जो एरर आ रहा है वी ब्लास्ट का, वो उससे कम कैसे आ रहा है, क्योंकि हमारे पास 2 ही ट्रांसमिट 2 रिसीवर हैं, नहीं और इसमें नहीं नहीं, पॉसिबिलिटी ये भी है हमने ना नहीं, कि जी हमने नहीं कहा कि वो कम आ रहा है, अभी हमने कुछ नहीं कहा। हम सिर्फ कह रहे हैं कि वी ब्लास्ट में 4 टाइम्स SNR-2 आ रहा है एरर, ठीक है। यस वहां सर, पे अगर आप LMOT को 2x2 में लगाएं तो ये SNR-4 हो जाता है, डाइवर्सिटी गेन सर वो वहां तो पे डिग्री इससे ऑफ डबल फ्रीडम, आ रहा है। वो जी, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ, डाइवर्सिटी एरर गेन है, एक्चुअली वो तो जी SNR की जो जो भी वजह पावर है है वो तो वहां पे डाइवर्सिटी गेन। एरर एक्चुअली कम आ रहा है LMOT में, क्योंकि वो SNR-4 के हिसाब से, ठीक है। यस सर, हाँ, यहाँ पे फायदा क्या है वो मैं डिस्कस कर रहा था। फायदा यहाँ पे अभी हम देखते हैं क्या फायदा। एक्चुअली ये कांस्टेंट पे, ये कोडिंग गेन में आपको फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि आप फुल अपना, आप समझें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूटिलाइज करें जो वहां आप यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। वी प्लस हैज अ स्मॉलर डाइवर्सिटी गेन 2 एज कंपेयर टू 4 फॉर LMOT ओवर माइमो, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, so full use of the spatial degrees of freedom allow more efficient packing of bits, resulting in a better coding gain. But coding gain we will be seeing is better in VBLAST, ठीक है। अब उसको कैसे पता चलेगा, आप चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे तो हमने BPSK के साथ मैंने आपको बताया कि अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि आप BPSK यूज करें 2 बिट्स, ये मैं समझा रहा था आपको। यस सर, वो जो आपने 1 और वाली 1 एग्जांपल, ये वाली -1 एग्जांपल है कि आपने BPSK यूज किया 2 बिट्स और स्पेशल मल्टीप्लेक्सिंग यूज की, तो ये 4 SNR-2 आ गया, ठीक हो गया ना। अब आप कहते नहीं जी मैं इसको कंपेयर करूंगा LMOT के साथ। अब मसला यहाँ है कि व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर एक्चुअली गेटिंग
if you're using BPSK over VBLAST, you are actually getting 2 bits per second per hertz, because every time you are sending 2 different BPSK symbols. Each symbol corresponds to 1 bit, so you are getting 2 bits per second per hertz, okay, in one time slot. Okay. But if I use, let us say, LMOT with just BPSK, then in that case, I will be just getting 1 bit per second per hertz. So I will be using LMOT with PAM over MIMO. So 4 PAM? Yes, 4 PAM. Why? Then Because now I will be getting 1 PAM symbol, but 1 PAM symbol will be equal to 2 bits. Hence the rate will be equal. Then I can very well compare. Let us try to see how this comparison boils out. So how can I use? Let us try to understand. We are using 4 PAM over LMOT. So you know average energy now is 5B square for one symbol. But you know in LMOT you are sending 2 symbols. So average energy will be 10B square. So power normalized will be power over 10B square. But you know you have to normalize the symbols. That is the main thing. So symbol has to be normalized with the under root of the average power. This will be under root 10B. So every symbol needs to be divided by 10B. Now what will be the LMOT symbols? The same thing. You have to use x1, x2. This will be x2, you know, negative conjugate, and this will be just x1. तो आप याद रखें ना LMOT में जो होता है डब्बा शब्बा जो बनाते हैं ना, ये हम exactly उसी को फॉलो कर रहे हैं. मैं दिखाता हूँ. ये देखिए x1, x2, this will be minus x2 conjugate, and this will be just x1 conjugate. Okay, we are using PAM. PAM has no, you know, conjugation, so we have just all real. So this comes exactly here. U1, U1 here. U1 conjugate is U1, and this is U2. U2 conjugate is U2, but U2 negative also. That is why it becomes positive. So this is your LMOT scheme for PAM. All right, for 4 PAM. Okay, and you are sending 2 symbols. One is minus 3B, other symbol is minus B. Now this is one code word. I send the second code word, and you remember I would like to have the second code word which is at the minimum distance, from XA. That is your intelligence, that you have to choose that which has the minimum distance. You can choose any other code word, but you will try to use which has the minimum distance. So I chose this. You could also choose some other. सर एक और भी चीज कहते हैं 4 PAM में मिनिमम डिस्टेंस हो और सब में डिस्टेंस सेम हो, हर कोड वर्ड में डिस्टेंस सेम हो. जी वो जरूरी नहीं है. अगर सेम है तो बहुत अच्छी बात है, मगर अगर इवन मिनिमम भी आप पकड़ लेते हैं तो आपको पता है कि बाकी सारे तो इससे ज्यादा है ना, तो आप इसके ऊपर उसको अपर बाउंड लगा सकते हैं. मिनिमम को 3 टाइम्स कर देंगे आप. अगर आप पीछे डेरिवेशन में देखें ना तो दोनों तरह से चल सकते हैं. बड़ी अच्छी बात है अगर सब इक्वल है, मगर आप ये भी देखें हमारे एक दफा इक्वल भी नहीं भी थे, तो फिर भी जो इसमें से मिनिमम था उसको हमने लेके उसको अपर बाउंड कर दिया था. जाहिर है जब वो मिनिमम तो अपने मैक्सिमम से छोटा ही है ना डिस्टेंस से, तो ठीक है उस पर अगर आप बाउंड करेंगे तो कोई मसला नहीं, वो तो फिर बड़े को कवर ही कर जाएगा. ठीक है, तो दोनों तरह से करेक्ट है. और हर वक्त जो है वो डिस्टेंस बराबर नहीं होते. बहुत डिस्टेंस यहाँ पे डिस्टेंस बराबर नहीं है. ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिया वैसे -3 -B, अगले वाले में मैंने भेजा -3B को -3B, यहाँ मैंने +B कर दिया, तो -3B -B में फासला 0 हो गया, मगर -B और +B का फासला मिनिमम आएगा 2B वाला. मैंने इसीलिए उसको पकड़ा. तो ये सेम है, तो ये सेम है इनके दरमियान. आप क्या कह रहे हैं? सर इनके दरमियान डिस्टेंस सेम होना चाहिए. उसने कहा ये -B और B के जब इसको लाइन पे प्लॉट करते हैं तो इनके दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं आता. हाँ तो डिस्टेंस मैं समझ आपकी बात नहीं समझ रहा. मैं एक सिंबल यूज कर रहा हूँ -3B -B, और अगला मैं यूज करूंगा -3B +B, तो 2 डिफरेंट कोड वर्ड्स हो गए. अब मगर मैंने इनको इंटेलिजेंटली चूज किया है क्योंकि इनका डिस्टेंस मिनिमम आएगा. अगर फर्स्ट मैं चूज करता -3B और -B मेरा पहला, और दूसरा वाला मैं चूज करता +3B और +B, तो आप खुद देखें फासला कितना ज्यादा आना था. आपका फासला आपका 6B और 2B का फासला आना था, तो बहुत बढ़ जाता आपका. मैंने जानबूझ के चूज किया मिनिमम वाले को ताकि हम उसके ऊपर हम अपना अपर बाउंड लगा सकें. ये मैंने XB को डिफाइन कर दिया. ये मेरा XA था जिसमें दोनों माइनस माइनस थे. यहाँ मेरा XB है जिसमें पहला माइनस और दूसरा मेरा प्लस है, +B है.
तो ये उसका आ गया। फिर मैंने इनका डिफरेंस लिया, तो जाहिर है जब डिफरेंस लेंगे तो जहाँ कोई डिफरेंस नहीं वो 0 0 आ जाएगा, जहाँ डिफरेंस है वो तो डिफरेंस आएगा, ये मिनिमम डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फिर मैंने इसका अच्छा, अब मसला क्या है, मसला है कि ये है पूरा मैट्रिक्स। जब मैट्रिक्स में आप आ जाते हैं जो और कोड अक्रॉस टाइम भी है, सारा चक्कर है, तो यहाँ पे आपने वो वाला यूज़ नहीं करना फार्मूला जो अभी हमने फार्मूला ड्राइव किया है वी ब्लास्ट का। यहाँ आपने फार्मूला यूज़ करना है LMOT का, और LMOT के फार्मूले में जहाँ पे n क्रॉस l का पूरा प्रॉपर मैट्रिक्स बन रहा है, तो वहाँ पे आपको पूरा मैट्रिक्स निकालना पड़ता है xa माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी इट्स हर्मिशन के साथ, ठीक है। ये पूरा मैट्रिक्स आएगा, इसको हमने इस पूरे मैट्रिक्स को लिखें, इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी ये वैल्यू आएगी, फिर उसका डिटर्मिनेंट लें, क्योंकि डिटर्मिनेंट लेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है, तो इसका डिटर्मिनेंट जो है 16/100 आ जाएगा। सर वो मैट्रिक्स दिखाइएगा, वो कैसे लिखा है? मैट्रिक्स ऐसे लिखा है xa माइनस एक्स बी और फिर xa माइनस एक्स बी का कॉन्जुगेट, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 0, ये इसके साथ जाएगा 4/10, ये इसके साथ जाएगा तो ये भी 4/10 हो जाएगा, और ये 0 0 ही रहेगा, तो 4/10 इंटू 4/10 हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 का 2 क्रॉस 2 आएगा जो 4/10 होगा, डिटर्मिनेंट लेंगे तो 16/100 हो जाएगा। सर जरा कंफ्यूजन हो रही है, ये बताइएगा ये मैट्रिक्स हमने जो XA वाला बनाया माइनस XB वाला बनाया, ये कैसे बनाया था? ऊपर थोड़ा सा ऊपर से ये पहले यहाँ x पे। से xb बना लें, यस सर, x से xb LMOT का बना लें, उनका डिफरेंस ले लें, तो सही xa हो गया, माइनस सही हो एक्स बी आ जाए, ठीक है। गया, ठीक। तो मुझे लगा वो पहले वाला वो कर रहे हैं जो वेक्टर्स वाला। हाँ, अब वेक्टर वाला नहीं, अब हम LMOT को चला रहे हैं ना पैम्प के साथ, सही है सर। तो ये आपका आगे 16/100 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद इस 16/100 को आप पुट करें उसके अंदर वो जो है स्पेस टाइम कोड के क्राइटेरिया फॉर 2x1 के लिए, सो वहाँ पे आपने देखें वहाँ पे SNR, चूँकि यहाँ पे 2L2 था तो SNR स्क्वायर होता है, यहाँ पे वो डिटर्मिनेंट आ जाता है जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू 16/100 आ गया, यहाँ पे 4 स्क्वायर होता है, आपने पुट किया तो आपका जवाब आ गया 100/SNR स्क्वायर। सो ये जवाब आया जब आपने सिर्फ माइजो को LMOT के साथ इस्तेमाल किया था फॉर 4 पैम। अगर आप यही LMOT इस्तेमाल करें फॉर 2x2, उसमें क्या होगा, यही वैल्यू को आपने बस क्या करना है, स्क्वायर कर देना, खाली इसी वैल्यू स्क्वायर कर देंगे तो ये 100,000 हो जाएगा, ये SNR 4 हो जाएगा। तो ये तो बात वाज़ेह है कि आपका डाइवर्सिटी एरर जो है SNR -4 है और डबल है एज कम्पेयर टू वी ब्लास्ट, मगर जो इसका कोडिंग गेन है वो 100,000 है, और वहाँ पे जो मतलब कि 10,000 है, और वहाँ पे 4 था, तो कोडिंग गेन के लिहाज से वी ब्लास्ट बेहतर है, और मतलब डाइवर्सिटी के लिहाज से LMOT बेहतर है। सर ये जो हमने ये ड्राइव किया, ये इक्वेशन 3.94 में ये सेम नहीं है? हाँ, ये सेम नहीं है, इसमें ना वो फिर एग्जांपल है कि इसमें थोड़ी सी इससे गलती होगी, SNR 4 सेम है, इसका 1600 सेम नहीं आ रहा, मगर वो यस सर। इससे गलती है। वो अगर आप देखें ना होमवर्क से जो इसने असाइनमेंट्स की हुई और सोल्यूशन दिए हैं, वहाँ पे देखेंगे इससे गलती हो गई है, 1600 नहीं आना चाहिए था, वरना इससे कम होता ही नहीं ना, ये 1600 तो पहुँचता ही नहीं है, वो 100,000 से कम नहीं आएगा। ये इसे देखिए -4 निकाला था, इसका मतलब इसने इसका स्क्वायर लिया हुआ है, स्क्वायर लिया हुआ है हाँ स्क्वायर करने का सर। इतनी कम वैल्यू नहीं आती, इसका मतलब तो फिर 400 40 तो का आएगा ही स्क्वायर नहीं, 40 आ 40 रहा का होगा स्क्वायर उसका है, स्क्वायर। यस 40 बनता नहीं है। आप देख लीजिए, या तो अगर आप कोई और कोर्स बना के देख लें, मगर इससे कम डिफरेंस होता नहीं है, मैंने काफ़ी चेक किया। फिर इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है, फिर लास्ट में हमने डिस्कस किया था, उसमें भी फिर यही वैल्यू आ रही थी जो हमने निकाली। बल आप चेक कर लें अपने सोर्स से, अगर कोई गलती तो बता दीजिएगा। So you can see even if you take 1600 or even take 10,000, same thing you can see it is much greater than 4. So with respect to coding gain, this is better, but with respect to diversity gain, this is better. So you can see V plus is providing me additional degrees of freedom. Okay, yes, and that will be covered in chapter 7, maybe in some other course. But we can see the limitations of our various techniques. Some techniques give us full diversity gain, but they cannot give us freedom of gain, degrees of freedom, but others give us full degree of freedom, but they cannot give us full diversity gain. Yes.
So previously we were actually trying to get maximum diversity gain, and then we were comparing them on the basis of coding gain. But this approach shortfalls of VBLAS and LMOT, because we can see LMOT has poorer diversity gain, but it exploits degrees of freedom more efficiently, or better coding gain. And a powerful framework for unified metric for having both, discussing both of them. This is not out of the course. This will be chapter 9 in some other course, or the second version of this course. Now let us go further. Now, one thing of LMOT was that it was a very low complexity maximum likelihood receiver, because you could see the signal was decoupled into two orthogonal single symbol detection problems. If you could see there, we had two columns which were orthogonal, and hence we were able to decompose it. But VBLAS does not enjoy that advantage. And you have to use joint detection of two symbols. If you start basically applying time diversity to VBLAS, then you don't get the advantage that is the advantage present inherently in LMOT. And so the complexity grows exponentially. So what could be the suboptimal single symbol detectors achievement or performance? So again, details will be coming in the later chapters which are not in the course, but here we will just discuss a very simple example, the D correlator, and try to analyze its performance in a 2x2 channel. Now let us assume that again we have this channel, and we are using the same notation that we just discussed previously, that H1, H2. H is actually H1, H2, where H1 is the column vector. It represents the channel coefficients from first antenna to the first and second antenna of the receiver. H2 represents the channel coefficients from the second antenna to the first and second antenna of the receiver. All right. Input is X1. X1 is applied at the first antenna. X2 is applied at the second antenna. So if you just apply two inputs, you will be getting two outputs. Okay. And we know that X1, X2, they are independent, totally independent. So how can we detect? One thing is that you can invert. You can apply an inverter. So the output is this. You just multiply throughout by H inverse. H inverse of Y, H inverse, H will cancel. You will just get X. This will become H inverse of W, and you can call this as W tilde. So now you have Y tilde is just equal to X, X1 and X2. So you can just apply detection to X1 and X2 separately. Hence we have actually separated the two symbols. And yes, your answer is solved. But we will be seeing this is suboptimal as compared to joint ML detection, because we will see the samples are correlated, and how much performance do we lose, that will be discussed in a while. So let's first of all assume that we are sending X1 from transmit antenna 1. So again, many steps are missing, so we'll be going to the notes. So again, I've tried to make this G. Yes. proposition है, अगर आप इजाजत दे तो सर Yes. हम ये प्रूव्स कर रहे हैं सर, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और हम तो ये बुक को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। बुक को तो आपने कंप्लीट भी नहीं करना, उसने सर ऐसे है क्या ना, आपने सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर्स करने हैं, वो तो हो भी नहीं सकता। तो वैसे भी चूंकि रमजान से तो लेक्चर कम हुए, फिर माशाल्लाह आपके सवाल भी काफी थे। अब वो सर जितना होगा उतना होगा, मगर हम जो भी करेंगे वो डिटेल में कर रहे हैं। सर ये जो चीजें हम मुझे लगता है जो पढ़ रहे हैं ना, ये चीजें क्योंकि बुक भी पुरानी लिखी हुई, ये चीजें इससे आगे अब लोग ना इसमें रिसर्च चल रही है, हम आगे वाली चीजों का नहीं पता चलना है। हम अगर इनकी यानी कि ना, कहने का मतलब है कि अगर प्रूफ्स वगैरह ये भी आपका बेसिक कोर्स है, ये आपको करना पड़ेगा तो आपको आगे वाली चीजें समझ आएंगी। आगे के माइमो इन पे बेस्ड है, तो इसके बगैर आप आगे चल नहीं सकते।
वो अगले कोर्स में, इस कोर्स में जो मैंने बताया वही आपको करना है, इसमें और कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, अगला सवाल क्या जल्दी पूछिए, मुझे खत्म करना है इसको। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मतलब कि हम डीप मैथमेटिक्स में, नो डाउट कि आप माशाल्लाह बेस हमारी क्लियर करें, लेकिन मतलब सर हम बैचलर्स भी करके जब इंडस्ट्री में गए थे ना, 2019 ग्रेजुएट के हैं हम दोनों, तो सर वो उधर मैथमेटिक्स इन डिटेल सर बहुत ज़्यादा नहीं है। और इवन डैट हमने जिन टेलीकम्युनिकेशंस में भी अप्लाई किया था ना, हवावे और ये वो, सर वो मैथमेटिक्स हम बीइंग इंजीनियर्स हमने सर फार्मर्स को अप्लाई करना है। मतलब हम उनके बैकएंड पे जो डिटेल मैथ्स और डिटेल डिस्क्रिप्शंस हैं सर, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। और इंटरव्यूज़ में भी इवन हमसे नहीं मैथ्स आस्क की जाती है कि हम, या तो सर फिर हम इसकी लैब इम्प्लीमेंटेशन या इसका कोई कोई मॉडल प्रपोज करें ना, तो वहाँ भी समझ आती है। मतलब हर एक सर इवन ऑथर जो TSE है उसने भी ईच एंड एवरीथिंग को अपेंडिक्स में कर दिया, मतलब हर चीज़ को इन डिटेल उसका प्रूफ। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मतलब कि बजाय हम प्योरली मैथमेटिक्स करने के, अगर उन चीज़ों को थ्योरेटिकल या किसी हद तक मैथ्स कम कर दें, क्योंकि सर हम कर तो रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रही है, ऐसे नहीं, आप बस पाकिस्तान की जॉबों पे देख लें ना, वो तो ज़ाहिर है यहाँ तो सारा कुछ इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, वो तो सारा बाहर से लाके आप लगा देते हैं, डिजाइनिंग तो हो नहीं रही ना। हम तो आपको जी। पढ़ा रहे हैं रिसर्च, मास्टर्स लेवल पे तो फिर आपको और ज़्यादा जाना चाहिए मैथ के अंदर। ये तो खैर मैं अभी स्टार्ट ही किया अभी, तो ये मास्टर्स में बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच होती है। और वैसे भी अंडर ग्रेड में थोड़ा सा होता है होलिस्टिक टाइप के, आपको जॉबें मिल जाए। मास्टर्स में तो फिर आपने अपना बिल्कुल ही मास्टर्स बना है ना, तो उसमें तो आपको अंदर अंदर घुसाना पड़ता है। अगर कोई टीचर ऊपर से करवा दे तो वो तो सिस्टम अप्रोच है, वो तो फिर आप सिस्टम इंजीनियरिंग में जाए ना। अगर आप इलेक्ट्रिकल में करने आए तो आपको अंदर जाना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये कोई सिस्टम इंजीनियरिंग नहीं कोर्स। सिस्टम इंजीनियरिंग की मास्टर्स अलहदा होती है जहाँ पे आपको ऊपर सिस्टम्स करवा दिए जाएँ। तो बहरहाल ये ऐसे नहीं होगा अगर आपने प्रॉपर मास्टर्स, ये मास्टर्स का कोर्स इसी तरह से बाहर भी डिजाइंड है। तो वो यहाँ अप्रोच डिफरेंट है, जो हमारे यहाँ तो आपको पता है वो सिस्टम लगे लगाए आ जाते हैं, बस आपने मेंटेन करना होता है, इसलिए वो इतने मैथ पे इंटरेस्टेड नहीं सर वो होते। भी हमें हाथ नहीं लगाने देते, इवन उनके पास जो सुपरवाइजर्स होते तो हैं जाहिर है इसका मतलब वो आप वो काम इंजीनियर का कर नहीं रहे ना, इसका नो मतलब ये नहीं कि सर, हम अपनी पढ़ाई को डाउन कर दें। सर वो आपकी पर ये बात इसका इस वक्त इसका बहस नहीं है, टाइम नहीं है, ये कोर्स बन चुके हैं, आपने इसको ही फॉलो करना है। ये कोर्स काफ़ी बहस काफ़ी उसके बाद होके बना है, और वैसे ही स्टैंडर्डाइज कोर्स है, तो सर बस इसमें ये कहना चाह आपकी रहे थे मर्जी कि से हम कर कुछ ज्यादा पढ़ लें, हाँ हम सॉरी जो है एक वही पढ़ेंगे और अगले, तो फिर टेक्निक अगला से। कोर्स पढ़ें आप इसका, या फिर आप अगले कोर्स में अप्लाई करके स्टूडेंट ज़्यादा करें तो इसका नेक्स्ट कोर्स ऑफर हो जाएगा। अच्छा प्लीज इसको खत्म करने दें ना। प्लीज सी h is equal to ओके h1 h2, but remember what is h1 and h2. h1 is a vector from first antenna to two receive antenna, so I have represented as 1 1 and 1 2, from first antenna to first receive antenna, from first transmit antenna to second receive antenna, and this will be from second transmit to first receive and from second transmit to second antenna. So if I will write my matrix, it means that this will be my channel matrix. I am multiplying this with this, and this is the the divide Gaussian noise and all that. So this will give me y, which is be a 2 cross 1. The output at any time across the two antennas will be given as follows. And again I have told you 1 and 2. You can use also different interpretation. Both the interpretations are given in the book. Here I'm using that I'm sending from 1 and receiving it from 1. The first subscript represents the transmit and the second represents the receive. You can also use the opposite subscription. Now, so we need to find the the H inverse. So how can we find the H inverse? We know if we have this H vector, we will just replace all the vectors by their cofactors and take their transpose and divide it by its determinant. So determinant is just H11, H22 minus this thing, and then the cofactors will be A11, A12, A21 and A22. So what is A11? A11 is just H22. What is A12? A12 is just H12 minus A21 cofactor will be cancelling this, will be H21 minus, and A22 cofactor will be just H11. I take its transpose, this comes here and this comes here, so I'll be getting this matrix. This is the determinant. So the received signal after being passed through inverse matrix, okay, this will be giving me h minus 1, this will be multiplied with both. It will be multiplied with the h of x as well as w.
With the H inverse with H, you will just get X. But H inverse will also go with W, so you will get W tilde as H inverse into W. So what is W tilde that we try to find out? So we know H inverse is this thing as we have just found into W, where W is again additive, wide, Gaussian noise, and that complex and all that you've already studied. So I do the multiplications, and hence I will get this 2 cross 1, 2 cross 2, 2 cross 1. This will be giving me a 2 cross 1 matrix after this multiplication. Here you can very well see that W tilde is now two vectors, W1 vector and W2 vector, because it is a vector W. It will have two scalars, W1 and W2. So what is W1? W1 will be this thing divided by the determinant. So again I try to solve W1. So I write H22. H22 is again complex conjugate Cn 01, and it can be represented at its it is a Rayleigh coefficient, so it can be represented as real and complex. W is additive, wide, Gaussian noise. It is also Cn. You can also write it like this. Similarly, H21 and this can also be written as like this. Then we do its multiplication. So this we have also done many times. So you do its multiplication, you will get 4 terms. You do its multiplication, you will also get 4 different terms. The values of W1s and W1s and W1R and W1I. So you can see that it will be these values. W1 real will be N0 by 2. Similarly, imaginary will also be N0 by 2, and this in this way you can write all these things. Similarly, for the second factor, you can also write the values. I've just replaced W's by N0 and N0 by 2 because we have already distributed them as real and imaginary part. Then you can take these H22s inside, as we have already seen. You can take these H22 inside. These factors go inside, once they go inside, they become square. This we have already proven in the basic properties of Gaussian random variables. Again, here the same thing will happen. You go take it inside, and they will all become square. Then you try to combine H22R with H22I. All right. So both are real. H22R with H22I. This is H22R and this is H22I. So I combine this and this. Again, this negative can also go inside. This will also become square. This will become positive. This will be positive, positive. You just have to add these two. So you will get these two. Again, these two are imaginary. I just add them. I will get H22R plus H22I. Plus H22I, this will give me H22 mod square. Similarly, for the other side, you can do the combinations of real and imaginary. Then now you can combine the real with the imaginary part. All right. So here you are also combining the real with the real part. These are both real. So this will be H22 square. This will be H21 mod square. They will be both added. And then these two imaginary will be added. And finally, at the last step, you will add the real with the imaginary. And in that way, N will become C of N. And these two variances will just be added. So now your noise is Cn, but its variance is actually N0 multiplied by this factor. So same thing again, the steps were missing. You can see the noise variance is the same as I have just driven. Now with this noise variance, what will be my output vector? Output vector will be just X because HH has cancelled. You will just get X1, Y1 will be X1. And here I have actually this, but I can take this factor totally out. Once I take it out, this becomes under root and the square cancels. And inside you have just Cn 0 and naught, which I can just call as Z1. This will be your Y1. And I can also write the scaled output Y1 dash, which is actually Y1 times this factor.
So I'm deliberately now multiplying my y1 tilde by this factor. Now, so what will happen once I multiply this? You know, if I multiply this factor with y1, so this factor will come here, and you can see all of this will cancel, and you will just get z1, which is cn0 and not. Okay. And here with x1, I will be getting this factor with x1. So I can write this factor also as follows, that this factor was actually h1. You know what was h1? H1 was the signal going from the transmit antenna J, all right, and phi 1 or phi j is the direction which is orthogonal to hj. So you can vary, this comes out to be phi 2, and this comes out to be h1, all right. So if you multiply this here, you can, if you put phi 2 here, phi will become 2, this will become h22, h21, h22, h21, and this will become h1 will be h1, which will be written h11, this will become h12. And you can see what was h1? H1 was actually the vector from the first antenna to the first antenna of the receiver 11 to 12 to the second antenna of the receiver. So h1 was just the vector h1, as you have just discussed. H1 is a vector from first antenna to the two antennas of the receiver. H2 will be a vector from the first antenna to the two antennas of the receiver. All right, this will be h1 and h2. So we are just discussing here with respect to h1. So I can say this is dot product of h1 with the phi 2. All right, and what is this phi 2 vector? Phi 2 vector is actually, you can see it is phi 2 will be, you know, I will put 2 here. This will be h22, this will be h21. So if you will multiply, you will get this thing. If you will multiply this conjugate of this with h, you will get this thing. Okay. So in order to get my output, I need to multiply this scale output again with this factor. So this will make the noise 0 and not, and the signal will become phi 2 h1 x1. But what is the meaning of this scale? That is, we will try to discuss. Geometrically, one can interrupt or interpret interpretation. Hj as the direction of the signal from transmitter j, and phi j the direction orthogonal to hj. Yes. If I put phi 1 here, you can see here, if I put phi 1 here, this will become h12 conjugate, this will become h11 conjugate. And if you take the dot product of h1 with phi 1, you will get 0, because your h1j will multiply with h2j, and h12 will multiply with h1 with minus, and they will cancel with one another. Okay. So h1 is orthogonal to phi 1, but here I am multiplying phi 2 with h1. So 3.9 says that when demodeling the symbol from antenna 1, channel inversion eliminates the interference from antenna 2 by projecting the received signal in the directional orthogonal to h2. So I want to get x1. Okay, I will project my signal into phi 2, because phi 2 is orthogonal to h2. So I will eliminate h2, and I will just get whatever the signal was sent for x1. The signal part is this thing, all right, and the signal gain, again you can see the scalar gain. This will be a dot product, is a circular symmetric Gaussian random variable, because you can see this is a you know, a normalized vector, and h, you know, is circular symmetric and all that, of a two-dimensional IID circular symmetric onto an independent unit vector. So unit vector, and we know the rule, orthonormal vectors, unit vectors, when you multiply you get the same. So symmetry, the Gaussian vector remains the same, and the scalar channel 3.99 is therefore really faded, like a 1x1 channel, has only unit diversity. So yes, you can see the 3.99, you just get one scalar value. It is just a scalar channel with you know, Gaussian noise, and this is simply a scalar channel with a coefficient which is really distributed, as you've done previously. But you can see that there is no interference from antenna 2. All right. So another factor now,
we have diversity of coding. Another thing is interference. When you are sending from multiple antennas, so the multiple antenna signals can come and cause interference in the demodulation of your symbol. Other interference signals can also come. That is called interference. If there would be no interference of antenna 2, the diversity gain would have been 2. Yes, it would have been 2, but now we just have 1, because now we are getting two symbols at the same time, x1 and x2. The norm of h1 has to be small for poor reception of x1. So yes, if it is small, then you will always have poor reception. That is quite understood, and that we have also discussed previously. However, the component of h1 perpendicular to h2 being small already wreaks havoc. And then the component of h1 which is perpendicular to h2 being small, that will all create more further problem, and this is the price that will be paid out for nulling out the interference from antenna 2. सर टाइम पूरा हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर है तो काइंडली आप नेक्स्ट लेक्चर आपका 2:30 बजे नहीं है, अब तो 1.5 घंटे के स्लॉट्स हैं सर। वो फ्री भी होना होता है, कंटिन्यूसली लेक्चर्स है, पहले एंटीना का भी लेक्चर था वो भी। तो एंटेना का भी आपको बीच में आधा घंटा दिया होगा उन्होंने शायद नमाज का। जी सर, वो नमाज भी पढ़नी होती है, तो खाना भी दोपहर का खाना, तो उसके बाद फिर सही सही। चलिए मैं आपका सिर्फ 3 मिनट और ले रहा हूँ, क्योंकि असल में ना वो 3 मिनट थोड़ा लेट स्टार्ट हो गया था, सिर्फ 3 मिनट ले रहा हूँ आपका, फिर इंशाल्लाह आपका बच चुके, वो इतना सा तो रह गया ये तो खत्म ज़्यादा नहीं हो आपको गया। पता है कंटिन्यूसली फिर वो चीज़ें फीड करनी ज़रा थोड़ा सा प्रेशर हुआ होता है। मुझे भी ये मैं भी थक जाता हूँ कि बात ठीक है, पहले इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से ख़त्म कर दूँ, क्योंकि 3 मिनट मैंने अपना वो आपको पता 75 मिनट्स पूरे करने हैं। अटेंडेंस आपको पता आजकल ऑटोमेटिकली लग जाती है। हाँ जी, मैंने अटेंडेंस की शीट भेज दी आप लोगों की, तो जी ज़्यादातर सर। आप तीनों ही स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और बाकी तो कभी आते हैं कभी नहीं आते। सर वो तो एक फ़र्क पर्सन जो जो सा भी है, उसके वो किसी ऐसी जगह पे रहता है पाकिस्तान की, वो कह रहे थे कि मेरे जो से ना इंटरनेट सिग्नल्स की वहाँ नहीं है स्ट्रेंथ इतनी खास, तो मैं वो जब ऑन ये कैंपस ना आता हूँ तभी। जो भी उनकी प्रॉब्लम है, कल हमें तो अटेंडेंस लगानी है जो क्लास में आ रहा है, जी तो मैंने शो कर दिया। हम लोग ज़ाहिर है वो कोविड वगैरह के चक्कर में और ये ऑनलाइन चक्कर में वो नहीं इतना कर रहे, बल हमने ये नहीं है कि हम उसको फर्ज नहीं कर सकते अटेंडेंस पर, जो अटेंडेंस है वही शो होगी, बाकी ठीक है वो हम वैसे ही ख्याल रख रहे हैं। तो उनको अपनी तरफ से कोशिश करें कि वो लेक्चर्स को अटेंड करें या फिर बाद में सुन लें। हम अटेंडेंस का ज़ाहिर है इतनी सख्ती नहीं है, चूँकि कोरोना भी है और ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, और इंटरनेट के मसाइल, मेरा भी बिजी चली जाती तो इंटरनेट का मसला हो जाता, तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए हमने उसको वो तो नहीं हार्ड एंड फास्ट नहीं कर रहे, बट ये कि रिप्रेजेंटेशन जो है वो सच्ची रिप्रेजेंटेशन हो रही है। ना सर, वो एक्चुअली फ़ोन करके बता रहे थे कि वो उनके इंटरनेट ही नहीं उधर आता, पता नहीं कौन वजीरिस्तान या किधर वो फिर रहते देख हैं। लेना, फिर इसमें तो एक उनको कहीं कोई हॉस्टल वगैरह में यहाँ आ सकते हैं, यहाँ तो हॉस्टल अवेलेबल है बाहर के स्टूडेंट्स कह के रहे लिए। थे कि कोविड की वजह से ऑफ है। नहीं, हॉस्टल्स ओपन है, जो ऑफ इस किस्म के वजीरिस्तान या फॉरेन के लिए, उनके लिए यूनिवर्सिटी जी ने सारे, इवन गवर्नमेंट ऑर्डर है कि उनके लिए ओपन रखे जाएँ, तो हॉस्टल जो है चलिए वो आ ठीक सकते है, हैं, बिल्कुल आ सकते ठीक है सर, मैं आपका मैसेज दूँगा। हैं। खैर 1 मिनट रह गया, आपने बातें कर दी काफ़ी। तो खैर मैं सिर्फ बता रहा था कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि H1 H2 के अगर ऑर्थोगोनल होता है, और फिर वो H1 आप कहते हैं कि वो छोटा भी होता है, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं बाद में भी डिस्कस कर लेता हूँ। ये मैं थोड़ा सा बस एंड करना चाह रहा था, अब 1 मिनट रह गया, इसका मैं दोबारा फिर आपके सामने डिस्कस कर लूँगा, ठीक है, कि थोड़ा सा डिस्कशन लंबी हो जाती है। 1 मिनट में चाह रहा हूँ थोड़ा सा ओवरऑल व्यू आ जाए। अब देखिए ये हम क्या, जो ओवरऑल व्यू में चाह रहा हूँ, जो इंडस्ट्री व्यू है कि ना, वी ब्लास्ट में आपने क्या देखा कि आपने टोटल यूटिलाइज कर दिया, कोई कोडिंग नहीं की, आपने बस उठा के अपने डेटा रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। सो इन चीज़ों को हम इंटरफेरेंस नलर या जीरो फोर्सिंग रिसीवर कहते हैं, कि आपने फोर्स किया कि अदर वाले को आप, और इसको डी कोरिलेटर भी कहते हैं, कि अदर वाले जो चैनल आ रहा था उसको आपने उसके ऑर्थोगोनल से मल्टीप्लाई करके उसको जीरो कर दिया आपने। इट नल्स द इफेक्ट ऑफ द अदर यूजर while demoting the symbol of one user. And this means if you are sending two users at the same time, so which is the other user is coming from H2 antenna, H2 channel vector, that will be nulled out. But the advantage is that the same channel is being utilized with two users. ये भी देखिए ना, आप दो users आप use कर रहे हैं यहाँ पे। So we can see the dual receive antenna, they perform, ये मैं चाह रहा था, two functions. They can either provide two diversity gain, ठीक है, when there is no interference,
or they can be used to null out the effect of interfering users by providing no diversity gain more than one, but they cannot do both. Okay. So but intrinsic limitation of the channel, but rather limitation of the decoder की limitation है. And if you apply joint ML detection, then yes, we can get two-fold diversity gain. ठीक है, time पूरा हो गया. I won't go further. So I will try to discuss the 2-3 things. Here मैं overall बता रहा था आपको कि आप किस तरह से अपनी सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं. नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ा दें, उसका डेटा रेट बढ़ा दें, या डाइवर्सिटी गेन बढ़ा दें. ये तीनों चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है, इंजीनियर के कंट्रोल में होती है. So I will end the lecture. You know, attendance is already marked. I'm sorry I have taken more time, but only 1 minute extra was taken. All right. Thank you very much. Allah Hafiz.